we have practitioners panel, Baaton Baaton Mein, initiatives engaging men and boys in gender transformation. I would like to invite Harish Sadani from MAVA, Men Against Violence and Abuse. Harish Sadani has pioneered efforts in India in 1993 as the co-founder and executive director of Men Against Violence and Abuse, where he works with young men to prevent violence on women. Harish has been mentoring thousands of young men to redefine masculinity. He is a TEDx speaker, a national consultant, and trainer to corporates, universities, and NGOs. Welcome, Harish, sir. Next up, I would like to invite Satish Kumar Singh, Senior Advisor from Azad Foundation. Satish Singh is a highly accomplished professional with over 40 years of experience in promoting gender equality, social justice, and human rights. His core areas of expertise include engaging men and boys to challenge harmful masculinities, advancing women's health rights, addressing gender-based violence, and fostering male responsibility in caregiving. Welcome, Satish, sir. Next, I would like to invite Yogesh Vaishnav, founder of Vikalp Sansthan and chair of MenEngage Alliance India. Yogesh Vaishnav is a development sector professional with over 31 years of experience as a grassroots gender activist, a founding member of Vikalp Sansthan. He has played a key role in combating gender-based violence and promoting equality, particularly among youth. His expertise spans gender justice, child marriage, masculinity, and participatory training. Welcome, Yogesh, sir. Next, I would like to invite Aleena Varghese, lead Masculinities, the Gender Lab. Aleena Varghese is a feminist development sector practitioner with around 6 years of experience in the field. Her key areas of inquiry have been on masculinities and sexualities, with a focus on education, working towards transforming educational institutions into queer, affirming, and gender-sensitive spaces. She currently leads the Redefining Masculinities vertical at the Gender Lab. Welcome, Aleena. Thank you for joining. And to moderate our panel, I'll be inviting Nida Ansari. I would like to invite Nida Ansari, the Communication, Partnership and Sports for Empowerment Manager at CEQUIN. Nida Ansari is a senior development consultant with over 15 years of experience in building youth-centric leadership. She has led intensive programs and campaigns on youth leadership, teacher training, constitutional rights, gender-based violence, ECM, sports for development, climate change, and urban redevelopment. Her expertise lies in strategic communication, narrative building, advocacy, fundraising, and partnership. Welcome, everyone, and I would like to hand over the conversation to Nida now. Thank you, Mariam. Warm welcome to all the panelists, Satish ji, Yogesh ji, Aleena, Harish. Can we have a round of applause? Thank you, and thank you, audiences, for being on time and coming back into the room with full bellies and open minds. Welcome, everyone. The first half of the day delved into conversations on masculinity, whether in politics, in public spheres, in cinema and beyond, and looking at the sector, looking at our vision for how we can engage men and boys more, what do we see as their roles, what are their needs to be involved in gender equality efforts. But now I'd like to do a deep dive, and as this panel says, Baaton Baaton Mein, these are initiatives engaging men and boys in gender transformation, and we are here with experts and practitioners who have been leading this work. So, let's hear from them. What are their models? What are their strategies that have worked best on ground to engage men and boys? Welcome to everyone, and I think, since the morning we've been talking so much about theories, about in the sector, what works, and we've spoken about many different sectors. But I'd like to start with asking you all, as a practitioner working on masculinities for so many years, engaging with men and boys, what has been your journey? How did you come to be a part of this space and working on masculinities? How does your organization work with men and boys? And, we can start with any one of you. Harish, maybe we can start with you. So, some of you in this room may be aware, Men Against Violence and Abuse, MAVA, was started in 1993
And the process began much earlier than that in 91, when a journalist called C.Y. Gopinath, writing an articles every fortnight in the Indian Express under the banner of causes and concerns. So he wrote on one cause of domestic violence. In those days, the word used was wife battering. Domestic violence as a word didn't come so much in vogue. So the article, which was written by C.Y. Gopinath's colleagues, who were all female, they were asking a question to Gopi that, for whom is the article meant? You know, is it meant for women readers so that they get a sense of confidence, how to deal with the situation, for whom it is meant? And you know, C.Y. Gopinath's team had this knack of asking lay public what do they think about the issue, on any issue which they dealt in that column. So the common refrain was, unless men's attitude change, nothing is going to happen in the real status of women. Now, hearing that, CY and his team thought, why not put up an ad appeal, a box sort of appeal, which read like this: wanted in top, men who believe that wives are not for battering, and if you are a man wanting to stop, please write to box number so and so. Now, to Gopi's own, surprise, and surprise of many, 205 men, including me, had written to that ad. And from those 205, 30 men continuously met for a year, deciding or planning as to what we will do which will complement the efforts of already existing work, and how is it that a group of sensitive, concerned men, what are we going to do? And you know, on 11th March 1993, MAVA was registered as a society, and history was created that we never realized what is in store for us. We were a group of 7 people required to form a society as a lawful entity. But there were lots of expectations, and as I said, we had prepared. The journey, what you are asking, so all those 205 men had their own motivations, each one of them. In those days, writing in 1991 through postcards, that yes, I am a boy, I am a man wanting to do something. And there was one youngest boy, 14-year-old, who said that I see at a bus stop a man raising hand on a woman, and I find several onlookers, including women, not doing anything. I want to do something, please admit me even if you are forming a group of 18 plus men. And that response really touched us, because normally any other adolescent boy would think that it is all right for a man to hit, because he had never seen interventions happening around where the violence is being stopped. So that was very unusual. And there was a 66-year-old man who said, teach women karate and everything will change. So what he meant was self-defense, but wide range of professionals, from banker to accounts person to engineers, they had responded. And I was the only one, a trained social worker, having my own motivations. So my own motivations, it's a mixed 3-level, I would say. As a child, while growing up, I used to do household chores with my paternal aunts, and I was teased as sissy by many of my classmates and boys from the building. And I remember clearly that I never took those taunts personally, but rather I was thinking in those days, as a growing up child, calling me a sissy like a girl, what does that mean? That women are secondary, that it is uncomfortable to call yourself a girl, not a manly enough, in those days. But I had my own father doing household chores without any hesitation or fuss, or involving my aunts in decision making. So I was looking at the conversations through my paternal aunts and through my father from a different angle. They kept alive even now. So what was interesting, that as gradually, there were questions which were plaguing all my adolescence. And when I was doing my college days, I was a big fan of Smita Patil. Some of you know
the late Smita Patil, who was an iconic person, an actress par excellence. And I used to go alone in theater houses and often weep after watching her films, but there were questions which were keeping me disturbed. So, you know, one fine day, I happened to see a filmy magazine in my nearby bookstore, where in those days in magazine like Mayapuri and Madhuri, they used to have addresses given of film actors of their, when their birth dates were happening in that particular period. So I happened to see Smita's birthday falling on that particular month, and I wrote a letter in my own handwriting, and within a week I get a reply. And thereafter started an unusual pen friendship of sort, where I used to write to her specific questions that disturbed me after watching a film or whatever I had thoughts. And she meticulously, those are now nostalgic memorabilia. I would say that some at least 6, 7 letters I have preserved in her own handwriting. But I remember I asking her, among the several ticklish questions, was when I watched the film Nishant, where you know, I was feeling that why are the Shyam Benegal as a male director had directed several films where women were strong personalities, right? But my question, which was disturbing, why are all men weaker in society? Why aren't they projected stronger or differently thinking men, stronger in terms of emotionally, I mean? So as a young college going boy, and I thought that Nishant, Girish Karnad's character could have been further upped, so that, you know, as a college going boy, that was my thinking. That, and I wrote to Smita that, don't you think that character would have been slightly upper, it would have been better, you know? So she just shrugged off the question, saying that it's a prerogative of the director. What are you, you know? But that question stayed me on. The real life and the real life me were connecting with each other. So, you know, and in my college going days, I was doing my master's in social work, again inspired by one of Smita's films, where she was, she had done master's in social work from TIS, and I joined TIS. And I was volunteering with a women's group, which is a very prominent women's group in our country. I was going there as a visitor to study how they were dealing with domestic violence and cases of counseling, you know, to see a first hand. And I remember in those days, there were some measures that were disturbing me. Like if men who were incorrigible, then the organization would have a dharna outside the man's house, blackening the faces of men who are incorrigible. And I used to feel disturbed that, is that the kind of response which will bring about any change or also succor to the distressed woman in any way? So I felt that somewhere the absence of men in any kind of movement for equality, that was a huge gap that need to be filled. And just at that time, this ad by C.Y. Gopinath had come, and I responded, and I never knew I will be taking the mantle and in a way spearheading a movement, you know. So the journey has been now 32 years. We completed on the 11th of March, and we still are ahead of our times, not just as an organization, but also in its approach, in the way we address the issue and put certain things as a priority, as non-negotiable. So I think we have come a long way, but what is very, very interesting is that, you know, those organizations that were looking with skepticism, including women's groups, they came gradually noticing that here's an organization that doesn't just talk theoretically about gender equality, but takes an active stand. They started coming forward and asking that let's join hands together. And the range of programs which evolved, like, you know, whether it was counseling men, which is not a priority area. Sadly speaking, I'm taking full responsibility. Counseling men is the least priority in all stakeholders who are addressing the issue of GBV, you know.
At the most, if the distressed woman says, now you can talk to my husband, then intervention is done. But proactively, there is a dearth of organizations that would give. So we started from day one listening to men, giving that space where they can talk. We started the first magazine by men, of men, for men in Marathi, which is called Purush Spandana, which means men's expressions. And this happened in Maharashtra, where there is a rich tradition of 100 years plus, where on the eve of Diwali, men are expressing. So, you know, a range of things, from workshops which are participatory, long-term, engaging, to theater performances, to a traveling film fest. We have explored different things, and gradually the focus has been kept as young men and adolescent boys, through which we will work long term. Thank you so much, Harish. Yeah, Satish, maybe we can start with you. I think because you've also, you know, you're right now, you're a senior advisor at Azad, but you've also worked across the spectrum in various roles and various spaces, so I'd love to hear from you. Yes, thank you. तो मेरे लिए जो काम था वो मेरी खुद की ज़रूरत थी. मेरे जैसे व्यक्ति, मेरा जैसा व्यक्ति बनारस के आसपास का सो कॉल्ड बैरियर कम्युनिटी से आने वाला, जिसको एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि पीट करके आना, पीट करके नहीं आना, जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको शमशान भेजा जाता है. उनका किससे डर लगता है? उनका भूत से लगता है कि भूत तुमसे डरता है. तो इस तरफ एकदम टॉक्सिक वॉरियर कम्युनिटी की जो शिक्षा दी जा रही है, और उसमें से बहुत अनकंफर्टेबल. अब बहुत सारे मेरे जैसे लोग. मुझे दूसरी चीज़ कि मेरे पिताजी वॉज ए वेरी ह्यूज फेमिनाइन क्वालिटी. मेरी माँ मैस्कुलिन रही है, और मेरे पिताजी को पंचायत में नहीं बुलाया जाता था कि ये मर्दों की जगह है. जो लोग अपने घर में अपनी पत्नी को पूछ के आते हैं, उनकी ये जगह नहीं है. तो अब मेरी भी क्राइसिस शुरू हुई आइडेंटिटी की कैसे हो. तो मुझे लगा कि हर जगह जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ पे इनइक्वलिटी है, वहाँ पे अगर हम कुछ करें तो मेरे जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत, आइडेंटिटी, पहचान बन सकती है. और इसलिए मैं तो अपनी पहचान के लिए काम करना शुरू किया, और जिसमें था कि मर्दानगी पे काम करना ही पड़ेगा. अगर मर्दानगी पे काम नहीं होता है तो मुश्किल है आगे बढ़ना. और उसके साथ जब काम आगे बढ़ा, शुरू में डाउरी को लेकर के काम हुआ, लड़कों की जो जिस तरीके की लीडरशिप में थी उसको लेकर काम हुआ. लेकिन धीरे धीरे जब हम सामाजिक न्याय में, गांधीयन मूवमेंट में देखने लगे, और कमला बसीन का एक चीज़ बहुत मुझे इंस्पायर किया 96 में. उन्होंने कहा, सतीश अगर तुम कुछ कर सकते हो ना, ये जेंडर की बात मर्दों के साथ शुरू करो. तुम मर्दों को सुधार लो ना, तुम सारे मर्द सुधर जाओ ना, महिलाएं सुधर जाएंगी. तुम मर्दों को बचा लो तो महिलाएं बच जाएंगी. तुम मर्द बचे ही नहीं हो. इतने रेप हैं, इतने हत्याएं हो रही हैं, तुम्हारी इतनी अमानवीय तरीके से जी रहे हो, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है. और क्योंकि मर्द नहीं बच रहे हैं, इसलिए महिलाएं नहीं बच रही हैं. तो इंटरेस्टिंग कि वो बहुत ज़रूरी था काम करना. और इस काम में हम जो एक बड़ा पड़ाव रहा है 2014 मेनएंगेज ग्लोबल सिंपोजियम, जो एक बड़ा संदेश दे के आया, जगह दे के गया कि इस काम को लेकर के फैलाने की ज़रूरत है और डीपन करने की ज़रूरत है जगह जगह. तो एक बड़ा काम आज़ाद जो कर रहा है, महिलाओं को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड में सशक्त बनाना. अब प्रश्न खड़ा हुआ कि महिलाएं सशक्त होंगी तो उनके साथ पुरुष कौन से हैं रहने वाले? पुरुषों को तो सिखाया ही नहीं गया सशक्त महिला के साथ जीना, उनको नहीं आता. और ये बहुत मुश्किल है. ये सारे लड़के जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, इनको घर में उनके घर की महिला पैसा लेकर के आए तो उनको अच्छा लगता है क्योंकि पैसा थोड़ा मिलता है, थोड़ी सुविधा बढ़ जाती है. लेकिन दिमाग में है कि मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगी क्योंकि इतनी लड़कियां आ रही हैं, इतनी लड़कियां जॉब में आ गई, नौकरी कैसे मिलेगी? ये उनका कन्फ्यूज़न है. दूसरी सबसे बड़ी चिंता उनकी कि रोजगार की है. ह्यूज नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, हम जिन एरिया में, कलकत्ता में, जयपुर में, दिल्ली में काम करते हैं, सभी बच्चों की है कि जितनी जल्दी से जल्दी निकलो. पढ़ाई से पढ़ के करोगे क्या? पढ़ के नौकरी तो मिलेगी नहीं.
तो कमाओ। तो ये एक चीज़ समझ में आया कि अगर लड़कों की पुरुषों का जेंडर भूमिका नहीं बदल रही है और जगहें कम होती जा रही हैं, और ऑफकोर्स जगहें कम होंगी, क्योंकि अगर महिलाएं इतनी बेहतर करेंगी, कई चीज़ें बेहतर करेंगी, अच्छा करेंगी और अपना हक लेंगी, तो जगहें कम होंगी। अब पुरुषों को जो फ्री में प्रिविलेज मिला था, जो उनको पहले समझ में नहीं आ रहा था कि एक तो ऑक्सीजन टाइप का है, मिला था, अब जब हटाया जा रहा है तो उनको बड़ी हाय तौबा मची हुई है। तो इसलिए उनको बचाने की बहुत ज़रूरत है। मैं 5 दिन की ट्रेनिंग में चौथे दिन लड़कों ने कलकत्ता में कहा कि आप इतनी बातचीत कर रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका क्या समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या ये है कि हम कैसे जिंदा रहें, और इस पर 3 घंटे बात हुई। क्या दिक्कत है? नौकरी छूट गई। नौकरी क्यों छूट गई? गुस्सा आ गया। अच्छा, और क्यों छूटी? अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम क्यों नहीं किया? सीखा नहीं। तो जब काम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? कुछ और सोच रहा था। तो उनके साथ सिर्फ इसी पे 3 घंटे बात हुई। हरी भी उसमें थे। उनको ये सबसे महत्वपूर्ण लगा कि जब पढ़ाई में है तो वो नहीं कर रहे हैं, जब फैमिली में है तो कुछ और सोच रहे हैं, जब काम कर रहे हैं तो काम नहीं सोच रहे हैं, इस काम को बेहतर कैसे करें, वो कुछ और सोच रहे हैं। और जितनी जल्दी से जल्दी, और उसके कारण एक नई समस्या खड़ी हो गई है एक्सप्लॉयटेशन की। अब उनके दिमाग में कोई मिनिमम वेज या राइट्स की बात नहीं है। जो कुछ मिल जाए 12 घंटे के लिए, अगर 6,000 रुपये मिल जाए तो चलेगा, क्योंकि उनकी भूमिका नहीं बदली है। और उनको लगता है कि अगर मैंने जल्दी से जल्दी मार्केट में नहीं उतरे, कमाया नहीं, तो मेरी शादी नहीं होगी, मुझे कोई पूछेगा नहीं, घर वाले बाहर निकाल देंगे, और मैं क्या करूँगा। दूसरी एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है, जो लड़कों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तुरंत आया। 3 साल से काम कर रहे हैं कलकत्ता में, और एकाएक वहाँ के लोगों ने हमको बुलाया कि बहुत जल्दी मीटिंग करने की जरूरत है। क्यों भाई? ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये यहाँ के लड़कों को पहुँचा है, और ये लड़के कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू को मार रहे हैं, हम इनको मारेंगे। हमने 2-3 से बातचीत की, दिक्कत क्या है? क्या वो गाय खाते हैं, गाय मेरी माँ है, अब मेरी माँ को खाएंगे तो मैं उनको मारूंगा। अब हमने फिर टीम से बातचीत की, हम कहा ये जो चीज़ें हैं क्या उनके दिमाग की चीज़ें हैं, और अगर उनका इमोशन जुड़ा हुआ है, क्या हम तर्क से उसको डील कर सकते हैं? तो इसका मतलब कि लड़कों के पास जो ये समस्याएं आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, उनके इमोशन के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब उनके इमोशन के साथ काम करना होगा, उनके साथ रिफ्लेक्शन करना होगा, उनकी मेंटरिंग करनी होगी इसको लेकर के। और एक और बड़ा खतरा जो लड़कों के साथ दिख रहा है, काम है नहीं, पढ़ाई है नहीं, और आइडेंटिटी चाहिए, बेरोजगार हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप, एक तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जहाँ पे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई पहचान रहा है, एक बंदूक मिल गई, एक पिस्तौल मिल गया, लोग जानने लगे, थोड़ा दारू पी लिया, बीयर पी ली, जानने लगे। नहीं तो राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं, सबको कैंपेन चाहिए, सबको चाहिए, भीड़ चाहिए, और ये उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा खतरा में है कि अगर इतनी ऊर्जा के साथ अनएम्प्लॉयड लड़के डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के साथ अपनी आइडेंटिटी के लिए अगर होंगे, तो एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि हम लोग शायद एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में पहुंच गए हैं। और इसके अंतर्गत जब हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो जो आज़ाद में कोशिश भी की जा रही है कि हमको इकोलॉजिकल मॉडल पे काम करना पड़ेगा, यानी केवल सेल्फ से भी काम करने नहीं चलेगा, हमको फैमिली में भी काम करना पड़ेगा, हमको सराउंडिंग कम्युनिटी में भी काम करना पड़ेगा, ताकि एक सोशल नॉर्म बदल सके। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जब काम करते हैं तो उनको मौगा, मेहरा, जोरू का गुलाम वगैरह वगैरह तमके दिए जाएंगे, लेकिन क्या ये बदला जा सकता है क्या? और क्या ये केयर वर्क, जो अनपेड केयर वर्क है, ये एक तरफ बहुत बर्डन है, दूसरी तरफ पुरुषों को एकदम बाहर कर दिया गया है। आपकी ज़रूरत क्या है? तुम घर के बाहर रहो, तुम करोगे क्या? तो पुरुष कहाँ सीखेंगे इमोशन? अब भी होली गई, होली में मैं देख रहा था अपने कॉलोनी में भी 90% पिचकारी जो थी वो मशीन गन का मॉडल था। तो अगर बाजार में इतना हिंसा की बात हो रही है और इतनी मर्दानगी की बात हो गई, हर बात में जीतना है, क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट ही देखना बंद किया। और जब लड़कों के साथ काम करते हैं, हम लोगों ने कहा कि चलो खो खो खेलते हैं, अरे ये तो लड़कियों का खेल है, क्रिकेट चाहिए। उनको कहीं से जाएंगे, पैसे कमाएंगे, बिडिंग करेंगे, लॉटरी क्या होता है उसमें पता नहीं कौन कौन आजकल गेम कर रहे हैं कि, और एक ही बात घूम रही होगी कि उसको जो है क्या कार मिल गई, उसको थार मिल गई, उसको क्या मिल गया। तो लड़के उस माहौल में जी रहे हैं। तो एक तरफ सोशल मीडिया है, एक तरफ टेक्नोलॉजी है, एक तरफ बाजार है जो कि बहुत एक्सप्लॉइटेड रेट पे उनको
छोटे छोटे काम दे देगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो अनस्किल्ड रहेंगे और उनको एम्पावर्ड महिला के साथ, एम्पावर्ड बहन के साथ, एम्पावर्ड पार्टनर के साथ रहना उनको नहीं आता है। तो इसमें कैसे उनको सिखाया जाए, निश्चित रूप से ये केवल संस्थाओं की उसकी नहीं है, इसलिए हमको स्ट्रक्चर पे बात करनी होगी, केवल व्यवहार बदलने की बात नहीं है, स्ट्रक्चरल इशू है, इसलिए स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे ये शिक्षण हो रहा है, इनका सामाजिकरण हो रहा है, उन सभी जगहों पे हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हम लोग इसको समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सतीश। सतीश जी, आपने तो मेरे 2-3 और सवालों का भी जवाब दे दिया जो हम आगे बात करने वाले थे, बट थैंक यू सो मच। आई थिंक योगेश जी, अलीना, आप में से कोई अगर बताना चाहेगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है एंड आपकी संस्था कैसे, हाउ डू यू गाइज वर्क ऑन विद मेन एंड बॉयज़? Yeah. First of all, I just want to share that it's my privilege to share the space with such pioneers in the space. I think I wasn't even born like when they had started the work. And to be sharing space with men who are practicing, right? That's a lot of hope. That's much needed. For us, I mean, a little bit of the story and what the work itself is. I think for the Gender Lab, the work began primarily, the core of the work has been with girls and young women on gender and leadership. It was only in 2017 that the work with adolescent boys started. Because we've been working in schools primarily, it was very natural when the conversations on we need to engage boys started to kind of wait and be like, oh, why didn't we think of engaging, you know, boys in the conversations, and what are these boys doing while we're talking and engaging girls in the schools? And I think personally I came in from a lot of my own location of frustrations with the kind of entitlements and the way power is exercised and all of that. And for the team, the leadership, it came from a lot of personal experiences, like they're also sharing in terms of what does it really mean to be a boy and where is that space to be kind of bringing those complexities. So when we started working with boys on gender, masculinities automatically became a big chunk of the work that we had to kind of explore. One shift for us has been that when engaging with adolescents in schools, we were challenged at our own assumptions of what does it mean to be a boy or what are the ideas of masculinities, to, in practice, start to learn how do we ask the question of, oh, what does it mean to be a boy to you? Like, what do you experience? How do you navigate a world that is so gendered? And what is your, you know, experience like in that, like, from where we began to where we are now, we've consciously moved away from the framework of toxic versus positive masculinity, because it was also creating new ideas and definitions of, oh, this is what now positive masculinities and this is how you have to be. And also it was almost like there was a homogeneous like idea of what, like the idea of what who a man is, like was becoming like a very homogeneous imagination for us. So while gender was an important entry point for us, for the boys that we were engaging with, they had realities which were not only coming in from gender, right? Religion, caste, sexuality, all of those things kind of came into their everyday existence, and at times even more critical than, you know, gender in that sense, because of reasons of how they experience power and privilege in relation to all of these things. So toxic positive framework is something in practice that we've had to move away from, and a big part of it has been that while we've had outcomes of their idea of unpaid care work and how they engage in that and how they value it, or are boys able to identify violence as violence, and are they able to identify gender stereotypes, while we had these outcomes, we learned one thing, that we also need to look into the question of what does it really take to transform, or what does it really take to change, in the sense of what experience do we want to create in the classrooms that we are engaging with, right? So when we are going and doing any program with the boys, what is it that they're experiencing and what is it that they're feeling, and going back with what is it that they make them want to engage and make them want to be like, you know, this is something that, so how do we in simple sense meet them where they are, has been an important question. It's been a journey, it's not been easy. Like, I think all of us learned that by doing, because it's not so much, it's also so much in the way that the programmings are designed and all of that. So these have been some of the shifts. I could talk more about what we see now in the classrooms maybe a bit later, but in short, yeah. Thanks, Aleena. Yogesh ji. थैंक यू जी। मेरी कहानी भी कुछ दोनों साथियों जैसी है। शायद इत्तेफाक से तीनों पुरुष एक साथ एक जगह पे आ गए। मुझे भी बचपन में दो शब्दों से बहुत नवाजा जाता था। या तो बोलते थे बहुत इंट्रोवर्ट है,
वो चुप रहता था, कुछ का बात नहीं करता, किसी से चुपचाप घर जाकर अपना होमवर्क करता, चुपचाप बैठता। बच्चे सामने खेलते रहते थे, मैं अपनी दादी के पास रहता तो कुछ पड़ोसियों ने मेरी दादी को बोला इसको डॉक्टर को दिखाओ कि ये किसी से बात नहीं करता ऐसा। दूसरा था कि या फिर कहता है कि ये बहुत लड़कियों जैसा है, तो वैसा ही मेरा हुआ। लेकिन मैं घर में और बाहर में मैं अपने आप को देखता कि बहुत फ़र्क होता। मेरी घर में मेरी बहन जब कभी कोई नया कपड़ा खरीद के लाती वो मेरे पे ट्राई करती और मैं बड़ा खुशी खुशी को पहन के दिखाता, चाहे उसका टी शर्ट होता, चाहे उसका सलवार कमीज़ होता, चाहे वो जो भी चीज़ होता। तो और लेकिन बाहर जाता तो बिना माँ बहन की गाली के कुछ बात ही नहीं होती थी। तो मैं बहुत ऐसा लगता था कि मुझे क्या हो रहा है, मैं अंदर से बहुत परेशान होता था और ना मैं उन लोगों से बात कर पाता था। तो हमेशा मेरे दिमाग में चलता था कि क्या तरीका हो कि ये लड़के ये ना बोले। बस इतनी समझ थी मुझे कि ये गाली जो है वो सही नहीं है, उससे ज़्यादा मेरी समझ नहीं बनी। कॉलेज तक आ गया, कॉलेज में भी यही स्थिति रही। कॉलेज में बहुत ज़्यादा मेरा कोई दोस्त अभी भी कॉलेज के नाम से नहीं है। मतलब बचपन से लेके कॉलेज तक मेरे कोई दोस्त नहीं बने, क्योंकि इसी कारण से मैं उनके साथ उठना बैठना नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैं काम में आया तो मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज से निकल के फिर मीडिया में कुछ दिन काम किया। वहाँ पर भी यही था, बाहर आर्टिकल लिखने में इतने सेंसिटिव थे हम लोग, लेकिन हमारा ग्रुप जब बात करने बैठता था चाय की थड़ी पे तो दुनिया जहान की सारी चीज़ें होती थी। और जो महिला साथी काम करती थी हमारे साथ रेडियो में और अखबार में, वो बहुत परेशान होती थी। तो मैं अंदर से बहुत परेशान था। फाइनली मैंने वो जगह छोड़ दी ऐसे करके। मुझे लगा कि शायद ये मेरी जगह नहीं है और मैं कुछ तलाश ही रहा था। इतने में एक संस्था मिली और उसके अंदर मैंने काम करना शुरू किया। वो आदिवासियों के अधिकारों पर काम करने वाली संस्था थी। वहाँ से मेरी थोड़ी समझ बनी कि जेंडर क्या होता है, जेंडर कैसे काम करता है, जेंडर की परिभाषा क्या है, कंसेप्ट क्या है, ज़िंदगी क्या है। तो मैं घर में जाके प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था। घर में जैसे मम्मी की मदद करना, बहन की मदद करना, वहाँ तक ठीक था, किसी को नहीं लग रहा था कुछ हो रहा है। जो ही शादी हुई और कुछ दिनों बाद मैंने अपनी पार्टनर जो ही कपड़े धो के बाहर निकली तो मैंने उसका बाल्टी लिया और कपड़े सुखाना। अब तक मम्मी और बहन की मदद कर रहा था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। देखा तो 3-4 दिन तक दोनों में अनबन बहुत तगड़ी चल रही है, कोई वो खाना नहीं खा रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है। मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। फाइनली मुझे पता चला कि चूंकि मैंने कपड़े सुखाए और उसके लिए मम्मी ने मेरी पार्टनर को बोला कि आते ही अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरे बच्चे से तो मैं पानी के गिलास नहीं उठवाती थी। तो फिर ये मुझे लगा कि अब क्या करूं, कुछ नहीं है। कुछ सतीश जी जैसे साथियों के साथ ये सब सीखा कि शाम के टाइम एक साथ खाना खाओ तो शायद उसका फ़र्क होगा। तो मैंने घर में किया कि भाई ऐसा है कि एक चीज़ मैं करूँगा, टीवी नहीं चलेगा, सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, दिन भर में जो स्टोरी है शेयर करेंगे। तो मैं अपने ऑफिस में, अब मेरे संस्था में, मेरे फील्ड में जो काम होते थे, मेरी ट्रेनिंग में, मैं सब वहाँ शेयर करता। धीरे धीरे थोड़ा माहौल बदलना शुरू हुआ। पहले मेरे मम्मी पापा को लगता है कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, शायद इसकी किस्मत ख़राब है। फिर बाद में लेकिन बोलने लगे कि बड़ी अच्छी काम करता है। जब हम लोगों ने ये 6-7 दोस्तों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी भी ऐसा ही था कि सब लोगों से जब बात करते थे हम बोलते युवाओं के साथ ऐसी मुश्किल है, वैसी मुश्किल है, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था। तो लोग बहुत डिस्करेज करते थे, जो थोड़े उम्र में थे, सीनियर थे हमारे, कि नहीं यंग लोगों के साथ काम करना और लड़कों के साथ काम करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लड़कियों महिलाओं के साथ काम करो। तो मैं उनसे पूछता था कि यदि किसी लड़की को सशक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उनका जवाब होता था वो अपने राइट को असर्ट कर सकती है। तो मेरा दूसरा सवाल होता था कि यदि वो असर्ट ही करेगी तो ज़िंदगी भर ये असर्शन चलता रहेगा ना। मैं आज एक हथियार के साथ उसके साथ हूँ, वो किसी और हथियार से तैयार हो गई तो मैं कुछ दूसरा हथियार लूँगा, फिर तीसरा। तो ये हथियारों की लड़ाई चलती रहेगी, असर्शन चलता रहेगा। तो लाइफ में जस्टिस कब होगा, उसकी ज़िंदगी में शांति कब होगी, वो अपने राइट को असर्ट, वो एक्सरसाइज कब करेगी। तो ये जद्दोजहद फिर दोस्तों के साथ हुआ। तो उनको ये समझ में आया हमको कि लड़कियों महिलाओं के सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, बट लड़कों पुरुषों का जुड़ाव और उनको संवेदनशील करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी शुरू हुई, जो विकल्प नाम का एक ग्रुप है और वो हम लोग उदयपुर में बेस्ड हैं, राजस्थान में काम किया। वीकेंड जो नसीम जी के साथ हम लोगों ने काफ़ी 20 साल तक वो वीकेंड एंड ऑल आइलैंड्स अगेंस्ट वीमेन करके एक कैंपेन था जो साउथ एशिया बेस्ड था और हम लोग इंडिया में उसके कोर ग्रुप का हिस्सा थे। राजस्थान हम लीड कर रहे थे। 1100 स्कूल कॉलेजों के साथ काम, वहाँ से मेरी समझ और नई तरीके से बनती चली गई। आगे और शेयरिंग का जब मौका होता है तो रखते हैं कि ऐसा मेरा 2 जगह पे ये जर्नी रहा। आज मैं अपने आप को थोड़ा सशक्त मजबूत महसूस करता हूँ। हर दिन मेरे आइडियाज़ बदलते हैं, एक जैसे आइडियाज़ नहीं है। जैसा मैंने 2003 में सोचा था वो और आज मैं हूँ, बहुत फ़र्क है मेरे में। हर दिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हर दिन मुझे सिखाती है कि असल में जेंडर का मतलब क्या होता है, या आप अपने आप को नारीवाद बोलते हो,
वो नारीवादी वो व्यक्ति कौन है हम समझाते हैं, तो उनकी समझ से मेरी समझ और शार्प होती है। Thank you so much, and thank you so much आप सबको for sharing deeply personal stories, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी और आप कैसे आपका जुड़ाव हुआ आपकी संस्थाओं के साथ और कैसे आपने शुरुआत की। आई थिंक थोड़ा सा सतीश जी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया था कि कैसे किस तरीके से आज़ाद क्या चैलेंजेस को देखते हुए आप काम को ढालते हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सर्टन चैलेंजेस, बिकॉज इट्स ऑब्वियस सुबह से बात हो रही है, देर आर अ लॉट ऑफ पुश बैक्स एंड लाइक यू सेड अलीना, this is not easy work. This is not work that all of us get funded for very easily in the gender space. This is not work engaging boys in changing gender norms is taboo. It's not easy. परिवारों में ही धुतकारा जाता है, अलग हजारों spaces में धुतकारा जाता है. So all of us are a very small group, you know, who are doing this, and there are many some of the other organizations who are also in this room. Some are not, but there are a handful of us, right? So. And there are many challenges and pushbacks. And सुबह से हम ये भी बात कर रहे हैं that the kind of pushbacks that we have, right? Especially अगर सशक्त हो गई हैं लड़कियाँ और महिलाएं, if women are empowered, then where are the men who are going to walk कदम से कदम बढ़ा के with them, right? Into this brave new world, this gender equitable world. So I'd like to understand from all of you that, you know, what are some of these challenges and आप लोगों की क्या best practices रही हैं? What is the process by which you engage men and boys, you know? In the morning, Mr. Gowda had also spoken about, you know, when he asked Sarah that if we are going to change values, then how are we going to do it? Where are we going to do it? So I'd like to hear a little bit about your best practices and which are the challenges that you are responding to, you know, in these practices. We can start with you, Harish. So, you know, there are multiple challenges, many hiccups in the work. To begin with, I mean, I think the paradigm shift which is needed from issues that have been largely seen as women's issue, and the only shift I see that it's an equally LGBTQI issue. It's not still an issue of cis heterosexual men and boys. When that happens, you are making a big jump. And I think we have a long way to go. There are no shortcuts. So what I always advise, I've been telling this to umpteen number of people and all that, you have to invest in men and boys. When you say invest, I remember the autonomous women's movement in the 80s, the results of which we are seeing today, right? Ordinary women are assertive. I'm not talking about the other, ordinary women. But several years, men have been not connected with these issues that are seemingly only women's issues. So I think for that paradigm shift to happen, you have to invest. You can't expect results in one day, one workshop, or 1 year, or even attitudinal change in 2 or 3 years. You have to give spaces for men and boys to reflect, critically think, unlearn, learn, and relearn. These are the 3 important words. When I'm working with men in their 20s, I cannot forget that they have already carried certain ideas about gender and masculinity, and when they come in my space, I have to give them those kind of spaces which are not just physical but psychological, where they are not labeled as a perpetrator, where you see them in a non-threatening way and keep on engaging, where they are asking questions, they are, you know, constantly reflecting the machismo within, you know, and questioning. So I think you need to give those spaces. So I find why I'm spelling this out, because often people are wanting easy answers in today's age, and especially working with young men, young boys, we are wanting to work with social media influencers. We must remember that this is, I don't know whether I'm putting my sermon of years of life, that human dialogue cannot replace technology. There is no shortcut. It can come as an aid. Use it as an aid only, but how much of your time and effort you are using. So I have gone through the harder way. There are other men who join, other men's groups who join MAVA much later.
But what has been MAVA's distinct thing that we were the organization focusedly working with men and boys. There were others who were having one program of theirs or 10 programs of theirs, but their dependency on remuneration and other things was on other projects and assignments. So for MAVA to not have an office for 10, 15 years, initial years, was a very painful thing. We were operating from our homes. But when a person like me wanting to work full time, there were no takers. I'm talking about 90s and thereafter. And I remember Poonam Mutreja is here that I had applied for a fellowship for 2 years, which I thought will give me an opportunity to work full time. And in those days, MacArthur Fellowship was given largely to women, scientists, doctors, very few men like Rahul Roy who had received. But I was wanting to work full time. So what started with a group of 35 young men from rural Pune gradually expanded to 9 other districts of Maharashtra. And thereafter, last 3-4 years, I upscaled it to Gujarat by tying up with a woman-centric organization, so new forms of collaborations. We tied up with a social enterprise in Assam, somebody who works on menstrual health and hygiene with boys, but wanting to learn more on gender and sexuality. So he became our collaborator, and then we had a university, the Jain University in Bangalore, with whom we, so we have evolved gradually, but I'll just quickly, for paucity of time, just spell out some of the important challenges for us, all of us to intersectionality. When we talk about intersections of gender, caste, class, there are no dearth of people who would say, I can do a lot of work on patriarchy, but I have nothing to do with casteism. They should search on Google Khairlanji, a place in Maharashtra, why it is defamed. Because an entire Dalit family was lynched and their bodies were mutilated and thrown into the drain. I'm not giving you chilling data. You'll find that the brother was asked to have sex with his sister in front of the entire village. So you can see, while Nirbhaya case was reported and got a lot of attention world over, there are umpteen examples of Dalit girls who are paraded nakedly, even in a city like Mumbai. But that never comes in the front page of the news. So that should disturb us, that what kind of news get coverage. So gender and media intersecting, gender and caste, gender and class, gender and orientation. So, I think that with looking at from an intersectional feminist lens, that is important. The other is about backlash we talked. We have to be worried about men's rights groups mushrooming in our country, and these are the groups that are spearheading Men's Day celebration on 19th of November. So we have to be utmost careful. Groups by the name Save Family International. When women were being abused and beaten, saving family was less important, or what? Now Save Family Internationals so that the men are in a precarious situation. So, we have to be worried what is being presented. So there is something which I call as a macho paradox. One side, people are expecting the traditional role of being a provider, protector. So what we say, man up on one side, and people like you and I want them to open up. So there are repercussions of both. If you don't adhere to the man up, then what are the price men have to pay? If you adhere to the opening up, we have seen since morning, like what are the kinds of, which boys and men go through. So I think that there is just one more point which I feel, I'm sorry for taking time, but I thought breaking the binaries is something, which all will have to grapple, because when you use the word masculinity, it is always in plural. And we have been always talking about this or that, but not many other options, So
I think challenging heteronormativity is a big thing when we talk about gender equality and engaging men. The use of social media, what is being consumed, and what repercussions it is having. So I think that also one has to, so I'm just... No, thank you. I think you've spelled out quite a few challenges that most of us would have spoken about, and very interesting what you spoke about caste and masculinity. ये बहुत ज़रूरी है. I think that is what intersectionality is, not just a loosely held term. It is कि आप ये नहीं कि मेरे पास 15 identities हैं, but आप उन identities को इकट्ठा कैसे देखते हैं? You know, where do I get placed in society? How do I get treated on the basis of those bunched up identities जिसमें masculinity के साथ and जो violence and aggression उसके साथ casteism का बहुत बड़ा रिश्ता है. So you're right about that. Thank you. I think Aleena, I'd like to move to you and the gender lab. So for example, like MAVA works a lot with young college men, young men in colleges, particularly through films and workshops. I know that the gender lab works in schools in particular. So I'd love to understand your challenges in your processes. Yeah, I think I'll highlight just a couple of things. I think within the masculinity space, the challenges are as much a part of the problem that we're trying to address. So it's kind of difficult to distinguish. One is with respect to having men, we feel that having young men coming to the work is very important, and the models that we've had did not really help sustain a lot of men engagement because of the stereotypes. It was not sustaining their livelihoods, it was harder work, it was longer work, etc. So I think, but engaging or cracking some pieces there in terms of how do we invest, like Harish said, in journeys of young men has been integral. We have like a very anecdotal one instance of a young male who started as a facilitator is now a full-time team member, shaping and creating and designing the work, in also being challenged of our own locations and how the work was designed as something. And also it makes it a little bit more real in terms of the conflicts between religion and gender, for instance, and how this young person navigates that. So there hasn't been a lot of space within programming in the schools itself to address a lot of these. So engaging with young facilitators has been helpful. It also remains a challenge. How do we bring in more people to share the burden of the work, you know, than those who are marginalized themselves? And I think growingly we see all of these issues that we were talking about in the morning, including Islamophobia, intolerance. We see it in like very direct, real ways in the classrooms. It's very disheartening to see that in different ways in terms of how the boys start to identify themselves, the friendships, the relationships, the nature of the conversations, a lot of adapted ways, the language that is adapted from the digital space and, you know, being influenced, etc. So it's a challenge also because we're also learning on the go, right? Because we started the work with, you know, certain intent and outcome, and then there's a constant need to keep learning. So it's both practically and to be able to continue the work itself a challenge in terms of, okay, now we see how digital space is important. What do we learn about that? We see that mental health is completely absent, you know, in the interventions or in the conversations or even an understanding of it. So how do we now be sensitive to that? So just to keep the work grounded in what you're doing, but to be sensitive to these, you know, changing ways in which masculinities get constructed for the boys in their who they are. I think it's a big part of the work, and it's a challenging work to do. And challenge in the sense it's a part of what we should be, you know, continuing to do. So a recommendation also in that sense would be, like Harish said, I think only way to continue with the work is to collaborate with people, like interdisciplinary collaborations, not just within the development sector, but in different ways. And I think a learning is also that, just to close my thoughts, a lot of our work has been, like primary work has been located in individual behavioral change kind of indicators. I think eventually over the years we'd also moved to learning to work with educators, learning to work with other organizations in our programming. And I think in the future of the masculinities work, we see that that's very important and critical to also understand how structurally, how socio-political shifts also kind of, you know, contribute to that, and not pin it only on the individual behavioral shift, but also to continue to create those spaces for transformation to really happen, because that process is very messy and that process is not a very neat, you know, straightforward process in that sense. So how do we strike a balance and work together in different parts of the puzzle? I think that's important. So, yeah. Yogesh ji, sorry, of course we are running short on time, but please, I'd like to hear from you.
थोड़ा सा challenges and how does किस तरीके से विकल्प में आप लोग आपकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या processes होते हैं to engage men and boys? सो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि अभी तक कोई आइडिया नहीं पकड़ में आया। बहुत सारे टेस्ट करते चले जा रहे हैं, पायलट करते हैं, हर बार कुछ नया आइडिया आता है, फिर कुछ करते हैं, ऐसे साथियों के साथ शेयर करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हम लोगों को इस दुनिया को तजुर्बा है कम से 125 साल से ज़्यादा का, जहाँ पे लड़कियों महिलाओं के साथ ठीक से काम करना सीख लिया, जहाँ पे हमारे पास डेटा है, रिसर्च है, टूल्स है, कहाँ फेल हो जाते हैं, कहाँ सक्सेस हो जाते हैं, सब कुछ है हमारे पास। पुरुषों के साथ काम करना, उनको एंगेज करना, उनके साथ उनको अलग तरीके से लेके जाना नहीं सीखा। एक ही चीज़ मैंने सीखी जो मेरे खुद से सीख रहा था कि उनको, जो हरीश भाई कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का कोई स्पेस होना चाहिए। हम पुरुषों की नाक बहुत लंबी बचपन से होती है, तो हम जल्दी, जैसे लड़कियों महिलाओं की कुछ भी मीटिंग करते हैं जल्दी से स्वीकार कर लेती है और जल्दी से आपको दिखता है कि अच्छा अगली मीटिंग में हमको कुछ रिजल्ट यहाँ पे देखे। लड़कों वालों में कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा, आंखें ऐसी कैसी रहती उनकी, तो थोड़ी देर में पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड जब मैं देख रहा हूँ कि 4 साल 5 साल 8 साल हो गए, तो कुछ भाई बदले हैं, कुछ फियांसीज बदले हैं, कुछ पति बदले हैं, कुछ कास्ट लीडर्स बदले हैं जिनके साथ हमने बहुत ज़्यादा काम किया। हमने फादरहुड पे काफ़ी काम किया, खास करके हम लोगों का कोर काम जो है चाइल्ड मैरिज का था। तो चाइल्ड मैरिज के अंदर पिता कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कास्ट लीडर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उनके लिए भाई कैसे हो सकता है, और फियांसीज, क्योंकि बहुत यंग एज में 13-14 की साल में उधर सब तरफ ही होता है और राजस्थान में वो ज़्यादा है कि उनकी सगाई तो कर ही दी जाती है। यदि किसी तरह से रुक जा रही है तो सगाई हो जाती है, तो वो उसके साथ पूरी तरह से एंगेज होते हैं, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। तो हम लोग जब लड़कों के साथ काम कर रहे हैं तो ये डायलॉग उनके साथ शुरू हुआ, तो ये मेरे को काफ़ी लर्न करने को मिला कि नई नई रणनीतियों के साथ करें। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि चूंकि लड़कों पर, जैसा सतीश जी बता रहे हैं कि कमाने का बहुत प्रेशर है, तो 13-14 साल में राजस्थान में से पूरे गांव के गांव खाली हो जाते हैं। कोई बस आती है, आप अभी 3 बजे मीटिंग कर रहे हो, 5 बजे पता चला बस में बैठ के सूरत चला गया, तो अब आप फॉलोअप नहीं कर सकते उनके साथ। आपने कुछ सेशन डिज़ाइन किए कि 10 सेशन इन लड़कों के साथ काम करेंगे, तो फॉलोअप में बड़ी दिक्कतें होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज शायद उनके साथ है। सरकार के साथ, खास करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, हम सभी लोगों का तजुर्बा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ किया, 1100 स्कूल कॉलेजों के साथ खूब लग के काम किया। लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति वहाँ पे है उस वक्त उसकी जो ठीक है तब तक ठीक है, जो वो प्रिंसिपल कुछ बदला और फिर कुछ बदल गया। और मैं 2014 के बाद से तो बहुत मुश्किल फेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब जेंडर की बात करना मतलब आप एंटी हिंदू हो, और वो वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें हो गई है, तो थोड़ा चैलेंज वहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। कम्युनिटी में बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंज है। ये गाली वाला प्रयोग बस मैं एक बता दूँ, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। जो मेरे को बार बार ये मन में खुद खोत रही थी, तो यंग लड़कों के साथ काम कर रहा था और सबकी उम्र करीब 14, 15, 16 रही होगी, और मैंने, हमारे साथ महिला साथी थी, मैंने कहा कि आप लोग बाहर जाओ, मुझे इनसे थोड़ा बात करना है। तो उनको बोला आप जितनी गालियाँ देते हो उनको लिखो चार्ट पे, पर आप विश्वास करेंगे करीब 132 से 135 गालियाँ उन्होंने लिखी चार्ट पे, और सब की सब गालियाँ महिलाओं पे थी, और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उनके सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में थी, और उनको कम करने के आंकड़े, क्योंकि विश्लेषण किया उनके साथ में। और लड़कों के लिए बामुश्किल 9 से 10 गाली थी, और सारी गाली जो थी वो उनको और उनकी बेहतर करने का। एक एग्जाम्पल के तौर पर, यदि ज़्यादातर लड़कों को बोला जाता था कि सांड है, सांड यानी कि बहुत मजबूत है, सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, किसी को भी मार सकता है, खूब पावरफुल आदमी है, तो मैंने कहा ये तो गाली कहाँ हुई, ये तो उसके लिए और अच्छा हो गया, आपने उसको एक सर्टिफिकेट दिया। तो गालियाँ जो है, तो इस पे ऐसे करके, जैसे मैं मनीष भाई भी मुझे याद आ रहे हैं कि उन्होंने भी गाली बंद करके काम किया और काफ़ी किया, हम लोगों ने भी वहाँ पे ऐसा सब किया। ओवर द पीरियड वहाँ पे थोड़ा फ़र्क हुआ, तो मुझे संतोष हुआ कि मैं कॉलेज स्कूल में तो कुछ नहीं कर पाया, पर यहाँ पे कुछ फ़र्क चेंज आया। तो ये जो बदलाव हैं, और अब आते आते इस वक्त इस दौर में हम लोग अभी, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का काम था और शादीशुदा लड़कियां चूँकि संस्थाओं से भी गायब थी, फंडिंग एजेंसी से गायब थी, सरकार से भी गायब थी, उनके साथ काम करना शुरू किया। जो अंडर 18 है और उनकी जल्दी शादी हो गई, उनको एंगेज किया, उनके साथ काम किया। तो उन्होंने भी हमको बोला है कि आप हमारे पार्टनर के साथ बात करो। जबकि मुझे आश्चर्य हुआ कि जब हम लड़कों के साथ इतना काम कर रहे हैं बरसों से, इनको अभी तक भी पार्टनर के साथ काम का समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हमने समझा और हमने कपल वर्कशॉप करना शुरू किया। अब इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को लेकर काम करते हैं। उसमें लड़कों के साथ जो शादीशुदा लड़के हैं, बहुत युवा लड़के जो 18, 19, 20 हैं, बस चुनौती यही है कि क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, ये हैं, तो लगातार उनके साथ जुड़ना, वो करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और
ये जो 2014 का जो मैं इंस्टांस में तब से लेके अभी तक हमारे राजसमंद में एक बहुत बड़ा इंस्टांस हुआ था, मार दिया गया था उसको, उसके बाद से कुछ और नई चीज़ें आई हैं और वहाँ पे बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो सबक सिखाओ एक न्यू नॉर्म हो गया हमारे कंट्री में। अब वो सबक सिखाओ लड़कियों महिलाओं के लिए भी है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी है। ठीक से कपड़ा नहीं पहनती है, सबक सिखाओ, उसका फ़ोटो करो, वायरल कर दो। यदि किसी लड़की को ये जो आजकल सिम बहुत आसानी से मोबाइल मिल जाते हैं, तो वो जो ही सगाई उसको दे देते हैं और उसके बाद में उस सिम का यदि वो अंगेज आ गई तो फिर उसकी शामत आ जाती है। तो इस तरीके के इश्यूज बहुत आते हैं, जो अभी विकल्प इस तरह के एक हेल्पलाइन भी रन करता है, वहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं। तो लड़कों के साथ काम करने का मेरे को व्यक्तिगत तौर पे लगा अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पकड़ में आया। कोशिश टेस्ट एंड एरर जैसे कुछ हो रहा है वो चलते जाए। कभी स्कूल में घुसते हैं, कभी पुलिस वालों के वहाँ जाते हैं, कभी WCD से बात कर रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कभी NSS के साथ काम कर रहे हैं, कभी टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें। हम लोग टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें मर्दानगी शब्द आया और सारे टीचर वॉकआउट कर गए। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनको लगता था वो दवाखाना वाला मर्दानगी वाला कुछ बातचीत होने वाली है और हमारे 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को बिगाड़ दोगे तुम तो लाके। बहुत समझाया उनको लेकिन नहीं माने। फाइनली वो मास्टर ट्रेनिंग चल रही थी और उसमें फिर हमको मजबूरी में महिला टीचर्स के अलग वो सेशन करना पड़ा और पुरुष टीचर का अलग करना पड़ता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बात करना तो और दूर की बात है। तो ये इस तरीके के चैलेंज बहुत नए नए से हैं। अभी हम MenEngage इंडिया करके हैं, करीब हम लोग अभी 10-11 स्टेट में अभी प्रेजेंस है और अप्रैल में लगभग 15 स्टेट लोग ऑन बोर्ड हो जाएंगे। वहाँ पर भी यही कोशिश है कि कैसे पर्सपेक्टिव बिल्डिंग हो, खास करके बहुत छोटी जगह में, गांव में जहाँ पे जा रहा है। और दूसरा हमारा एक और समझ बना कि हर लोग, हम सब लोग जा के गांव में वनरेबल कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, बट असल में एक्सप्लॉइटेशन का चक्का चलाने वाले, जो वायलेंस को वैसे करने वाले, पावर को एक्सरसाइज करने वाले, तो वो दूसरी जगह पे जो टेक्निकल कॉलेजेस में हैं, शहर में हैं। तो हम लोग अभी उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी यदि थोड़ी भी समझ बनेगी, थोड़ा भी टिल्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि समाज में थोड़ा स्पीड से ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा। तो ये मेरी अपनी समझ बनी है पूरी संस्था की ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेश जी। आई थिंक क्योंकि समय काफ़ी कम है हमारे पास, बट जस्ट टू wrap up all the thoughts in very, very short, if I think given all these challenges and given the way that we work, like, and योगेश जी आपने बिल्कुल perfectly sum up किया कि there's no one formula. हम कहीं एक जगह से entry point करते हैं तो कहीं कहीं और से करते हैं, you know, and it depends. And because लड़कों की और मर्दों की ज़रूरतें at different age groups, from different regions, from different castes, class, religion, it will be different. आपको अपने अप्रोचेस, अपने करिकुलम्स, अपने प्रोग्राम्स थोड़े टेपर करने पड़ेंगे। एंड उसमें जैसे कि आपने कुछ मेजर चैलेंजेस भी बताई, जो सबक सिखाने वाली बात आपने की है, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, स्पेशली टू द यंग मैन जो हु आर नाउ ग्रोइंग अप, यू नो, इन दिस एरा। बट आखिरी में आई थिंक I'd like to close with just one line from each of you, that given all of this, और ये जो मर्दानगी की परिभाषा आप बदल रही है, राइट, एंड देयर इज ऑल्सो दिस होल एरा ऑफ पुशबैक। हम लोग सुबह एंड्रू टेट का नाम काफ़ी सुन रहे थे, वी स्पोक अ लॉट अबाउट एंड्रू टेट, यू नो, इन द मॉर्निंग, बट इंडिया में कोई कमी नहीं है, हमारे अपने लोकल एंड्रू टेट्स हैं, लोकल ऐसे स्पोक्स पीपल हैं, यू नो, जो मर्दानगी की परिभाषा डिफाइन कर रहे हैं एंड लोगों को बोलने की यही है, ऐसे ही फॉलो करिए आप, ये अग्रेशन है, ये गुस्सा है, सबक सिखाना है, हक छीन के लेना है, राइट, एंड कंट्रोल में लेना है। सो इस सब सिनारियो को देखते हुए, एंड स्पेशली यंग मैन हु आर also worried, right? They are confused, worried, they are scared, they are insecure, there is a fear. What is your suggestion for the work with men and boys? If you could give one crisp line में last thought on suggestion. एकदम crisp पे ये है कि मुझे लगता है, मैं बहुत सकारात्मक तरीके से सोचता हूँ। मुझे लगता है अभी भी दुनिया पूरी तरह से खराब नहीं हुई है, बहुत लोग अच्छे हैं, इसलिए पूरा कमरा भरा है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसी संभावना है, क्योंकि जब कभी मैं डेटा देखता हूँ तो बोलते हैं कि 33% महिलाएं हिंसा का सामना करती हैं। शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन क्या बाकी, तो इसका मतलब उतने प्रतिशत पुरुष ही वायलेंट है, बाकी नहीं है क्या? यदि नहीं है तो वो कहाँ है? हम क्या उनको असफल हो रहे हैं उनको जोड़ने में, उनको ऑनबोर्ड करने में? तो पहला काम ये है। दूसरा, मुझे लग रहा है जो कुछ बदलाव, यदि आपने मेरे साथ कुछ काम किया, मेरे अंदर कुछ बदलाव होता है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा तब तक सस्टेन नहीं कर सकता। और मुझे वापस एक जगह चाहिए, जब मैं यदि कोई प्रैक्टिस करता हूँ घर में छोटा छोटा भी जेंडर या इक्वलिटी को या मर्दानगी के दूसरे फॉर्म को,
तो उन व्यवहारों पर मुझे आने वाले चैलेंज को कोई वापस सुन सके मेरे लिए बात, वो सेफ स्पेस भी चाहिए। तो ये मुझे 2 चीज़ें ज़रूरी लगती हैं। Thank you, Yogesh ji. Satish ji. जी, एक तो मुझे लगता है, मैं टीम के साथ भी बात करता हूँ कि उनको सुनाने मत जाओ। एक तो उनको सुनो, उनके अंदर क्या चल रहा है उसको सुनो। दूसरा, उनको सिखाया जा सुनना। वो घर में अगर सुनना शुरू करें तो कुछ समझ सकते हैं। तो ये है कि उनको सुनना सिखाया जाए। दूसरा कि अगर मेरे कुछ प्लान पे अचीव करते हैं तो उससे उनको ऊर्जा नहीं मिलती है, वो खुद छोटे छोटे माइलस्टोन तय करें, अचीव करें, उससे उनको ऊर्जा मिलेगी, फिर वो आगे रोल मॉडल बन सकते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि हर जगह जितने भी यूथ आते हैं सब पॉलिटिकल कम कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन से, पार्टी से हैं। कलकत्ता में तो और भी मुश्किल है। तो इसका मतलब कि हमको उन लोगों के साथ भी संपर्क रखना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्शन कराना है। नहीं तो इतना उनको लगता है कि जेंडर इक्वलिटी और पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी करने का मतलब आप मुझे मेरी पार्टी से डीरेल कर रहे हैं, ये वो लेकर के बैठे हैं। तो इसलिए बहुत शक बाहर बैठा रहता है पार्टियों में। तो इसलिए उनके साथ भी एक संवाद जरूर शुरू करना पड़ेगा। जी, Thank you, Satish ji. Mine very quickly already what I shared in terms of one is continuing to collaborate. I feel there's no other way to learn to do this work and continue with it. And secondly, to keep coming back to also individual changes and stories of hope, which I agree to Yogesh ji that there are those 3 school managements who've done extraordinary, taken extraordinary efforts to bring in something. So yeah, just these 2 things. Thank you. Harish, some last word from you. So I think all those concerned people, stakeholders who are wanting a gender equal, healthier, pluralistic society, that dream we are having, we have to ask certain questions like what works, what doesn't work while working with men and boys. And who better than asking the people on the field? So I think every fellow gendered being will have to take a pause and see the other gendered being, understand the empathy, what that person has gone through. I think that day by day is shrinking. So those spaces will have to be built, and we all have to co-create. And one important multi-million-dollar question, which I always say, that while working with men and boys is so critical, is that while you work with men and boys in a particular space, the lives of the women of those men will change, will become healthier, enriching, right? But what it is going to give them, men per se, in return? What are the personal gains men are going to get if they give away privileges, which is what an important condition is needed, for patriarchy to be dismantled. And there are no shortcuts. You have to tell, you will have to give away privileges. So if I give away privileges that I have been enjoying for years, what am I going to get in return? That if you answer in a colloquial language, in which your target audience men, whichever setting, school children, college going, men at the workplaces, how you engage them, that in the long run, this is going to be for my own well-being and mental health equally, for a gender equal society, violence-free society, which is for all, not just for women and other minorities. That if we are crystal clear and that we are able to amplify in all our work, then we are moving ahead. Thank you so much, Harish. I think that was a wonderful note to end on, that how do you relate to the other, that could be another gender, it could be another caste, and also what are we taking away from it? If I give away my privilege, what am I gaining? I think that's beautiful. Thank you so much. I just wanted to check, do we have time for 2 questions, I have been instructed. If there are any questions in the audience, yeah, there's one behind, and there's one here. Hi, I'm Shaturupa and I'm here from the YP Foundation. So we also work on masculinities, but this is a question that
हम भी बहुत इसके बारे में बात करते हैं when we sit for team meetings or usually. So we work in campuses, especially in Rajasthan, and those are private colleges where most of the people there come from privileged caste and class backgrounds. So वहाँ पे जब हम GVB की बात करते हैं, and especially जब हम ये बोलते हैं कि GVB कैसे women and other marginalized genders के against हो रहा है, the first question that comes up from men usually is what about men? या फिर what about men के rights? What about the violence that happens against men? So how do you usually, like as somebody जिन्होंने इतने सालों से काम किया है on masculinities, how do you usually tackle with that question, and how do you usually respond to something like that? Yeah. Thanks, Shatrupa. Would any of you want to pick? Yeah, you up. So I think, you know, the more experienced and mature you are, you will be able to answer it differently. You know, person like me would say, you know, a certain percentage of men are violated by some percentage of women, violated by a large chunk of men themselves, and a large number of men are oppressed by the system, which is patriarchy. Now, how have I answered it? I'm not saying that, you know, all those people who claim that up till now it was happening only on women, now it's happening on men. You have to have a fine balance without diluting any of the others. The nuance. Yeah. You are not belittling the contributions of women's movement and saying in any way, you know, but then you have to also take sides. When people are clamoring for gender-neutral laws, you should be crystal clear, India is not ready at the moment. Which India are you talking? Those youngsters who are looking on equal parity, who have been raised equally, they are looking it from their prism. And so therefore they will demand for gender equal neutral laws. There are 35%, 40% of women, independent-minded women, but still unable to take decisions relating to their lives. Are they coming in your India, which you are talking? And there are 45% of women who are still struggling for existential problems, life of dignity and safety. They are struggling. So which India are we talking? So, you know, how you build the narrative without belittling that. And, you know, as I was, I was talking the macho paradox, you don't have to, you know, because I say we want men to be part of the conversation, we want men to be part of the solution. I cannot forget that while I am a gender rights activist, I am a man. I have to talk about what are my own situations in which I am grappling with, battling with patriarchy in my own way, if I'm not able to relate and talk with the other men. So I think you'll have to adopt different strategies, but without belittling, but telling that we are crystal clear, we are not saying that it is men versus women battle. It's the mindset which is the enemy, and often that mindset can be in a people with, less oppressed also can be in that. You know, just as we say Brahmanism or Brahmanical tendency is the enemy, Brahmins are not the enemy. So I think we have to be mindful every time. If we are crystal clear that who's our enemy and we collectively have to fight, then I think there will be more men listening, pausing too. Yeah. Thanks, Harish. Thanks. We are almost out of time, but we are totally out of time. My apologies. I'd like to thank all my panelists.